So our topic is today preposition. Okay, preposition. Which preposition? I'm talking about two. Okay, the preposition two. Okay, first is on. This is called on. This is called o. This is called aux. And these preposition we use for the country. Suppose I am saying the. So first on preposition we use for the country is feminine. Okay, and second the o we use if the country is masculine. Third we use aux. It is called O if the country is plural. So depends. So these सर लास्ट preposition, वाले की प्रोनाउंसिएशन क्या है? yes, this one we say on, O, O. This is also O, O, on, O, O. The T, these two O, O. Okay. So like if I speak, wait, if I say the Zabit dash dash dash, then I write here and. Okay. So it can be 2 or 8 as well as for the country. Okay. Zabit dash. So India is masculine, feminine, or plural country. What is India? We have to judge the gender of country. So India is feminine फेमिनिन country. So we have to use on. Okay. कौन? On. If I say the way dash dash on end. So in the same way we have to write here on because India is feminine country. If I say you wa dash dash dash, which preposition I'm going to use here? Let me know. ओ Oh, because Canada is masculine. Tiwa o Canada. Okay. If I'm saying here, mes amis vont dash dash dash. Okay. Then I'm writing here e etas uni. So which preposition I'm going to fill here? Let me know. ETA uni, United States. So ओ it is oh, it's plural. Got it? In this way, we fill the preposition for the countries. Okay. O. So these are fixed. We can't change them. Hmm? For example, sir, the third one, the country name is starting from vowel, but we will not use the vowel one any. Here is no any concept of vowel. Okay. In country, we don't have any concept of vowel. Okay. We have concept of vowel in article definite. Okay. Article contracted, due, the, la. We talk about like this. But here we don't have any concept of like this. Okay. For masculine fixed, for feminine, we have fixed preposition. For सर feminine, कई बार ना कंट्री के नाम के पहले इन्होंने जो ले वाला आर्टिकल है वो भी लगाया था, वो कब लगता है? तो ओके, वो तो डिपेंड करता है आप क्या बात कर रहे हैं बट यू आर टॉकिंग अबाउट 2 और 8 तो यहाँ पर बात नहीं करेंगे वो आर्टिकल डेफिनेट हो जाएगा फिर दैट इज आर्टिकल डेफिनेट ओके सो आप इसकी जो बात कर रहे हैं लेट मी चेक इट सर जैसे लिखा था उन्होंने ला कनाडा वैसे। ला कैनेडा दैट इज आर्टिकल डेफिनेट ओके। दैट इज आर्टिकल डेफिनेट दैट इज अनदर टॉपिक डोंट मिक्स इट ओके तो दिस इज द सेम थिंग हेयर लुक एट इट you have to fill O, this preposition. O we use for the country, A for proper city name, O for masculine, and AOUX for. So this preposition we use for the country, and this we use for the city. And apart from this, we have this another preposition we use for the meaning of and from. So here, festival, the festival are Leo or Leon. So Leon is a city. You gonna use this one. Hmm? You can understand. Festival a Leo. Festival take place a Leon. A Leon. Okay. First. En France, because we are talking about the city. France. Angleterre. What is Angleterre? Yes, Angleterre. Angleterre is a country, England.
So England is country feminine. We're gonna fill on. Look at it. Tu voyages en Angleterre. Angleterre. You traveling in England. Okay. Lisa va Mexique. So Mexique. Mexique for Mexique. Mexique is a country. Okay. What is Mexico? Country. Mexico. So it's a noun masculine. We're gonna write O. A-U-O. Belgique. Okay. Mozambique. Okay. We have to check it. Belgique. Feminine country. We have to write on. Ravien. Look at the verb. I'm talking about the verb here. Which verb is it? Revenir. What does it mean, revenir? I told you na venir. And it's revenir. To come again. Venir is come and revenir means come again. Okay. Mozambique. Mozambique. So Mozambique is an African country. Okay. So it's a masculine. We're gonna write what? We're gonna write AU. So like this, we have to do this exercise. Once you do, definitely then you understand what you have to fill. Okay. I will give you exercise to do. Wait. You have to answer. Sorry, you have to question. You have to write the question of these. Okay. Write the questions. And please take care. Don't write in simple form. And do not write ask. Okay. Like Zave a la place, you have to change this sentence into interrogative. Zave a la place. Où vas-tu? Okay, like this. Où vas-tu? Change it, please. Zave a la place, and you done quelle place? Quelle place vas-tu? No, it's incorrect. Okay, so correct sentence is où vas-tu? ऐसे कीजिए या ऐसे. Où allez-vous? Okay, où allez-vous? This is the correct. Second sentence, il vient de l'école. He is coming from the school. No, this is also incorrect sentence. आपको फोकस करना है बेटा. आपको फोकस करना है हाउ टू मेक सेंटेंस इंट्रोगेटिव. The U. It is the U. From where? Il vient de l'école. From where? Il vient. The U il vient. The U vient-il. ऐसे कर दो. The U vient-il. ऐसे. Inversion. From where? The U vient-il. Second be incorrect. Je donne la clé de la voiture à ma épouse. I give the car key to my wife. Quel? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सारे इनकरेक्ट है. इसका सेंटेंस होगा. व्हाट इज द आंसर? आपने किए? सिमरन, आपने सेंड नहीं किया अभी. यस सर, कर दिया. अकी. क्वेश्चन इज अकी. टू whom? अकी ट्यू डॉन. अकी ट्यू डॉन लक्ले दलबाचू. ऐसे बनेगा ये सेंटेंस. कहाँ है आपके? अच्छा, नहीं, ये दूसरे वाले कहाँ हैं आपके? अमन ने किए हैं. ठीक है, अमन ने करे हैं ये. ठीक है ना. फिर आपके रह गए ना. अमन ने किए हैं. सिमरन ने आपने नहीं किए सेकंड वाले. राइट द क्वेश्चंस. सिमरन आपके नहीं हुए अभी. I sent a private message to Amanpreet. Wait, I'm sending again. तो इस सेंटेंस अकी. अकी मीन्स टू whom द डॉन. टू whom you don't लकले द वॉचर. Sir, I send it again. लकले ऐसे करना है. लकले द वॉचर. ओके. ये इनकरेक्ट है. सारे इनकरेक्ट हैं. दोनों के इनकरेक्ट हैं. So this एल is of Aman. I send it again.
एल पार्ल फ्रांसेस ए चिनोis शी स्पीक फ्रेंच एंड चाइनीज। कहाँ है ये सेंटेंस? केल लोंग, केल लोंग पार्ल एल। So सिंपल please सेंटेंस। check mine. ओके, देखते हैं। आपके तो सारे इनकरेक्ट हैं, इनके और देख लेते हैं, है ना। ये क्या है? केल लोंग पार्ल त्यू, तो इसमें आपका भी करेक्ट इनकरेक्ट है। त्यू के साथ ई जेड, वाई यू आर यूजिंग ई जेड, सो हेयर यू यूज वू, है ना। who एथ, why you are using ether verb, incorrect. who is not correct. ether verb क्यों लिख अब ये ether verb क्यों लिख रहे हैं मुझे बताइए। ether verb का मतलब क्या है? इसमें ether verb है क्या क्वेश्चन में? क्या यहाँ पर ether verb है? जदोन लकले, ये भी नहीं है। ठीक है, एल पाल फोन्से शिनवा के लॉन्ग पाल थे वो, ये भी ठीक था, बट आपने प्रोनाउन गलत कर दिया। एक मिनट होल्ड करें। ओके, सो के लॉन्ग पार्ले वू और पार्ल त्यू। ओके, देन देन वी हैव अनदर क्वेश्चन। ओके, द अबित ऑफ ओंटारियो, व्हाट इज द क्वेश्चन? हु अबित यू, दिस इज द करेक्ट। हु अबित यू, दिस इज करेक्ट। ओके, हु अबित यू, आपने इसमें कैल यूज कर लिया, दैट इज नॉट करेक्ट मेथड। ओके, दैट इज नॉट करेक्ट, यू हैव टू यूज हु अबित यू। जलील लिव्र, व्हाट इज द क्वेश्चन? जलील लिव्र कैल, नो नो, दिस इज इनकरेक्ट, यू डन इनकरेक्ट। जलील लिव्र, qu'est-ce que tu fais? Jalila livre, I read the book. What is the question? Qu'est-ce que tu fais? What you read? Il fait froid. What is il fait froid?
Incorrect. We already read it. What is the weather? Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? What is the weather? Il fait froid. Okay. And a pays incroyable. Incroyable. What is the comment est l'Inde? This is correct. You done correct. Comment est le? Right article definite here. Comment est l'Inde? Okay. We have to write article definite here. So correct it. Il ne prend pas de pomme. No, this is incorrect. The question should be like, okay, one thing. I think, okay. Est-ce qu'il prend de pomme? So you write here de la pomme, dala or de. Okay. What you write here? Est. Minor mistake you done. ESTCEQ. Est qu'il. I'm writing here. Minor mistake you done. So what is the answer? Est qu'il prend de la pomme. This is the correct answer. Okay. You have to write here dala, or you have to write here they if you are talking in plural like this. Okay, if you are in plural, you just write s and they. If you are in singular, just write dala. Okay, so this is the correct answer. Est qu'il prend the pomme? So you didn't write dala here. That's why your sentence is incorrect. Zanata kone, I don't know you. What is the question? You didn't do it. Zanata kone pa. What is the question? Timo kone? Timo kone, do you know me? Simple. Or you can write ask before the tu. Ask Timo kone. Okay, Timo kone. Connector verb. In last class, I gave you this conjugation to do. Okay. Il joue dans le jardin. Il joue dans le jardin. He play in the garden. What is the question? Où il joue. Simple. Où il joue. Or we can say où joue il. Où joue il. Like this. Okay. Simple. You done? You done this one. Okay. Say about you the Mr. Sharma. This is the car of Mr. Sharma. What is the question? No. Kel. Why you are using Kel? Kel. What is the meaning of Kel? What? So here I'm asking Aki. Aki. A set voiture. Aki a set voiture. Aki means to whom? Okay. Aki. Okay. Aki a set voiture. Yeah, we can write it. Yeah, it's correct. Okay. Saison de cahier. What is the question you write it? Why you are writing? In the first class, I told you, na? Saison de cahier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is this? You know very well. You done this answer. Qu'est-ce que c'est? C'est un pomme. Ce sont des pommes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cahiers. Je vais bien. I'm fine. What is the question? Comment allez-vous? It is correct. Comment allez-vous? Okay. This is the correct one. Comment allez-vous? We have to write the hyphen here. Say, Mr. Modi, what is the question? You done it? Huh? Say, Mr. Modi, comment tu t'appelles? What you done here? Say, Mr. Modi. Say qui? I told you. Yeah, we can write it. Yes. Okay. Yes. Like this. Okay. Like this. Yes. Say qui? Who is this? So I'm not asking the name. I'm not asking. Answer is not Ilsa. Ilsa Pel Mr. Modi. If answer is Ilsa Pel Modi, then you can write it Ilsa Pel Como. Say Mr. Modi. You know you done this work. Say Mr. Modi. Yes. Who is this? Zapron du pain. I'm eating the bread. What is the question? What is the question you done? Zapron du pain. You need not done.
Qu'est-ce que tu prends? What you are taking? You know. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends? What you are eating? Qu'est-ce que tu prends? What you are eating? Je prends du pain. Il boit de l'eau. Qu'est-ce qu'il boit? You can write it. Qu'est-ce qu'il boit? Okay. So answer is qu'est-ce qu'il boit? This is the answer, correct question. Qu'est-ce qu'il boit? Qu'est-ce qu'il prend? Nous sommes au mois de décembre. What is the question? I told you. Nous sommes quel mois? Okay. Nous sommes quel mois? Yeah, we can write it. Quel mois nous sommes? Quel mois sommes-nous? Write it like this. Quel mois sommes-nous? Inversion. Il est 7 heures. Il est 7 heures. What is the question? Il est quelle heure? Right. It is correct sentence you done. Il est quelle heure? Or we can say quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Okay. Inversion form. And il fait beau. You done? Il fait nuit? No, 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 no. You can say quel temps fait-il? This is the same. Where it is? Okay, I'm writing here. Quel, quel temps fait-il? What is the timing now? What is the season now? Like this. Quel temps fait-il? Il fait nuit. Okay. So you have to answer like this, please. All students, please understand. This is the method. Otherwise, this simple way you can write it ask, or you can write it simple way. But I am not asking to do the sentence in simple way. I'm not asking using ask. So I'm not asking using inversion. You have to answer. If I'm saying I'm going to picnic, so you have to put the question where you are going. If I'm saying this is the car of Mr. Sharma, so you have to put the question, Aki, to whom is this car? A qui est cette voiture? Ce sont des cahiers. These are the exercise book. Qu'est-ce que c'est? Question is qu'est-ce que c'est? So please understand, you have to do this answer again from your end. Once you do, definitely you will understand how to answer this question. Okay? So now I'm giving you these questions and you have to answer these questions. First is, il y a combien de mois dans une année? How many months in a year? You have to answer the question. Il y a 12 mois dans une année. Il y a combien de jours dans une semaine? How many days in a week? You have to answer. Il y a 7 jours dans une semaine. Quel est votre mois préféré? Which is your month prefer? Then you will answer. Je préfère mois de décembre. या janvier, février. Quel est votre jour préféré? Je préfère samedi. I prefer Sunday. Quelle saison aimez-vous? Which season you love? Quelle saison aimez-vous et pourquoi? Pour, Q-U-I. Okay, and why? Answer it. Justification here. Give the justification. Like, j'aime l'été. I love the summer because I eat the ice cream in this season. So give the justification why you love the season. So next question. Quel est votre anniversaire? You have to write down here birthday, date. Quel est l'anniversaire de votre sœur and frère? What is the birthday of your sister and brother? So quel sont fait-il? The same question. What is the season now in Canada? You have to answer. Il fait beau, il fait chaud, il fait chaud, il fait froid, like this. Nous sommes quel jour? What day is today? Nous sommes quel jour? Nous sommes samedi, nous sommes lundi. Il est quelle heure? What time it is? You have to write down the time. Nous sommes quel mois? Okay, nous sommes quel mois? We have what month? Nowadays, currently, what is the month? Nowadays. So, quel mois nous sommes-nous? This is the inversion. So, you have to answer. Nous sommes au mois de février. Okay. Next question. Nommez les mois de l'année. Name the month name. Or we can say quels sont les mois de l'année. What are the name of the month? So you have to write down month name. Hope you understand the question. Okay. You have to answer this question after the class. If you want, I can give you the screenshot. You take the screenshot and do it from your end and send me once you are done.
So don't think so that because the student generally do the mistake as you done. Okay. Don't get nervous. The mistakes are common for everyone. You also done, me also. When I was a beginner, I also done the same mistake. Okay. So not an issue. You done the mistake and you will learn how to erase your mistake. Okay. So I just open the chat box and download it somewhere. Do this exercise and send me after the class, please. Everyone. Okay. Any doubt? Any question? No, sir. Understood? Yes, Did you sir. did you enjoy the class? Yes, sir. You know the answer, but this is not the same. It's not common. It's not like I told you the way, simple way, and using the inversion and using the ask. This is not the same thing. आपको आंसर दूसरे डिफरेंट वे में देना होगा। अब आप इस तरह देंगे तभी तो आपको पता लगेगा। अब मैंने बोला से आ मैंने बोला जे आई डोंट आंसर जे अन स्टिलो आई हैव अ पेन। मैंने बोला से ल स्टिलो द मोनामी। I have a pen and this pen is belong to my friend. Okay. Shall I still the monami? Then आपको क्वेश्चन क्या बनाना है? किसका पेन लाए हो? ओके. Whom pen is it? So Aki e set estilo. Aki e set estilo. You know set estilo. याद है ना आपको बताया था मैंने एडजेक्टिव set estilo. उसके बाद तुरंत नाउन आता है. You have to write the noun. Set estilo. Aki e set estilo ऐसे. मैंने बोला आई एम गोइंग टू कनाडा. व्हाट इज द क्वेश्चन? वेयर यू गोइंग? मैंने बोला आई एम प्लेइंग. आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? व्हाट यू आर डूइंग. मैंने बोला आई सेंड द लेटर टू माय फ्रेंड इन कनाडा. कनाडा क्वेश्चन होना चाहिए टू whom यू आर सेंडिंग लेटर. ठीक है ना? सो नाउ यू आर द परफेक्ट स्टूडेंट्स. यू विल आंसर द क्वेश्चन. आई सेंड यू द एक्सरसाइज इन द चैट बॉक्स. इसको लें और प्लीज इसको करें और सेंड करें. ठीक है.